Hey guys, what's up? Welcome back to some more gameplay of Hogwarts Legacy. And लास्ट टाइम हमने यहीं पर ही छोड़ दिया था एंड यहाँ पर उस जो लड़की थी उसने लाइक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बताई है एंड उसके बाद अपने हेल्प करना है क्योंकि वो तो टिल देन लेगेसी सीरीज काफ़ी प्यारी है एंड गेम भी बहुत अच्छा है. They must have come this way. Think! Okay, so यहाँ पे डार्क I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! या सो अब अपने को फाइट करने पड़ेगी इनसे. देखो ओहो ओके वो तो गया सीधा. जी इस बंदे को अपनी तरफ खींचता हूँ इसको भी सीधा मैं ख़त्म कर सकता हूँ वैसे. He's dead. बाय बाय. ओह एक और विज़र्ड आ गया. प्रो क्या एंट्री थी इसकी. लेट्स गो. ये रेड कलर में है. The collection section of your field guide has been updated with a new enemy type. You may learn valuable sides on enemies such as their weakness and certain spells. So कह रही किसी किसी spells के लिए vulnerable है and मैं उससे कर सकता हूँ. Okay, मेरे को oh no. मैं इस बंदे को सीधा मार सकता हूँ. ये गई. इसके ऊपर ना मुझे आग वाला मारना पड़ेगा. याद है भी वो अब काम कर रहा है ना. ये भी गया. इजी. मैंने 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया. कंप्लीट द बैटल इन या 30 सेकंड्स भी नहीं, मैंने 24 सेकंड्स में खत्म कर दिया. I've never been accosted in such a manner and so close to Hogwarts. या सो द थिंग इज लाइक उसके ऊपर ना लाल लाल शील्ड आ रही थी और मुझे लगा कि लाइक लाल वाली मैं एक बार मार के देखता हूँ वो उसको फिर उसकी शील्ड चली जाएगी एंड वही हुआ. हाँ. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who's Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Okay. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. How extraordinary. I thought Merlin was a myth. I thought the Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. How fascinating. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted.
You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. तो अभी हम like इस रिसर्चर की मदद कर रहे हैं and maybe शायद कुछ ना कुछ मिल जाए. Trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow सारे sweet. उठा लूँगा. Okay. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial Vines. has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Okay. So मेरे को यहाँ पे रखना है. Yeah. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. तो यहाँ पर खाली 3 ही वो हैं पिलर्स हैं, लेकिन ये चौथा इस साइड देख रहा है, लेकिन इस साइड कोई पिलर नहीं है. ओके, सो मैं इन पिलर्स के पास जाता हूँ. मे बी यहाँ पर कुछ करना हो. मे बी मैं इसको उठा सकता हूँ. नहीं, Incendio! आग लगा दो उसमें. The flames make the pyre sink. ओके, तो पास से करना पड़ेगा. क्या देवी को? ओह, ये नीचे जा रहा है इससे. क्या सो वो डूब रहा. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. वो गायब कहाँ हो गई? I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Alright. यार ये वाली ट्विन बहुत अच्छी लगती है ना, लाइक बिल्कुल ही हैरी पॉटर जैसे है. तो फ्रेंड्स ऑफर्स ऑड्स एंड वो चला गया. So let's see like अगली क्वेश्चन क्या है. पोशन क्लास एंड ये ऑब्वियसली लाइक हॉगवर्ट्स के अंदर होगी एंड मैं इस समय हॉगवर्ट्स के बाहर हूँ. तो हॉगवर्ट्स मैप एंड पोशन क्लास यहाँ पर है और मैं यहाँ पर सीधे के सीधे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ इजीली विथ फ्लू पाउडर. तो हर चीज़ ना लाइक इंग्लिश वर्ड से मिली हुई है. जैसे ल्यूमिनस लाइट है, लाइक ल्यूमिनस ल्यूमिनस जब यूज़ करता है वो लाइट के लिए यूज़ करता है. और इन फ्लेमिंगो शायद ऐसे ही कुछ है जो लाइक आग लगाता है. तो हर चीज़ लाइक इसी से ही बनी हुई है. एंड यहाँ भी लाइक मेरे को क्लासेस में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा करने पड़ेंगे. जैसे कि अगर तुम लोगों ने बुली गेम देखा होगा तो उसमें भी वो एक यूनिवर्सिटी के ऊपर है, लाइक एक बच्चा होता है लाइक वो यूनिवर्सिटी में होता है एंड उसमें तुम अलग अलग क्लासेस कर सकते हो और हर दिन की क्लासेस होती है तो मुझे जा के लेनी होती है मेरी क्लासेस. ओके, वो सामने वाला लाइब्रेरी का रूम है. ओह अरे ये ऊपर क्या है, ये मेरे को चाहिए. एक और इसका रास्ता शायद यहाँ से है क्या. ये देखो ये हर बारी भाई. ओ ये वाला नहीं पहले हुआ था. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Let's go. F to begin.
ये नया प्रोफेसर है शायद. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. तो अब अपने को पोशन बनाना है, वो भी हीलिंग वाला. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. तो मैं फुल तेजी से घुमाना है इसको. There we go. Oh, okay. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Okay. तो ये थोड़ा थोड़ा ही डालना है. And stir it. पर आराम से घुमाना है, पूरी तेजी से घुमाना है. फुल तेजी से घुमा रहा हूँ मैं. बस इतना ही था. ये गया भाई, ये फटेगा. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. भाई लक बता दिया यार, इतनी मुश्किल से बनाया था वो. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. My parents considered keeping me home So, from school collect this year that. after... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Heard correctly. Why do you want to? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. Yeah, so You're as अंदर से clever लेके as I'd आना है वो. hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'm not sure that's a good idea. I can get you that feather. Yeah, बिल्कुल. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potions. मेरे को अंदर जाना है and ये कौन सा फर है? सब उठा लेता हूँ यार अंदर से. कुछ नहीं छोड़ूंगा. And subject ये like एक letter है. Okay, chest भी ले लिया है. Revelio. Revelio. तो ये feather था जो मेरे को चाहिए था. I think so मैंने और सब ले लिया है. और कुछ है नहीं यहाँ पर. Yeah. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew.
You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okay, so हमने Weasley की मदद कर दी है। Have patience and be thorough. एक मेरे को कौन सा ये वाला पोशन बनाना है ना मेरे को, तो इसको भी लगेंगे लाइक आधा मिनट लगने वाला है उसको। इसका कोई सीन ऐसे नहीं है कि लाइक मैं जल्दी इसको बना सकूं। And now we have the Mallow Suite, and that's odd. What's happening? Professor Sharp must have... Wait, it's not supposed to... Ah! Oh no. Get it! क्या बना दिया भाई इसने? What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. लॉल भाई अपन फंस गए। नहीं, मुझे नहीं लगता Weasley के लिए लेके आना चाहिए था भाई, उस बंदे को नहीं आता कुछ। ओके, मैंने ये भी कलेक्ट कर लिया। I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry about that. I didn't know what you mean. Yeah. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. So now what? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Oh, so ये अमित ठाकर है and ये Indian है, पता है? So Professor Sharp seems to be disagreeing. I was relieved. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. ये स्क्रोप कौन है? ये तो पहली बार मिला है शायद बंदा। if you might be able to help me with a small. यार मेरे को ना Some kind soul वो चीज़ चाहिए होगी जो मेरे को सामने रास्ता दिखाती है। ये देख, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मुझे लगता है वो वैसे कोर्टयार्ड में कह रहा था ना बंदा। डोंट नो, मे बी कोर्टयार्ड या इसी तरफ से ही होगा। वैसे तो कोर्टयार्ड को लगा लाइक बाहर गार्डन जैसी जगह होगी वो। ये जगह इसको मैं तोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, बट इसके ऊपर ऐसे आग क्यों रहा है? मे बी मैं इसमें आग लगा सकता हूँ। ओह नाइस। तो
बहुत सी चीज़ें मैं बिल्कुल सही सोच लेता हूँ, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर हम डुओ भी कर सकते हैं, वैसे अब ये आ गया होगा। This note. Scope knows about the book you have found. Is it missing something? Scope does not believe it is safe to speak out in open. Scope has left another note. तो वहाँ पर भी लाइक जो हैरी पॉटर होता है उसके अंदर भी स्कोप की तरह एक छोटा सा बंदा होता है, एंड वो भी अपना नाम ही लेता रहता है बार बार, यानी ये भी ऐसे ही कर रहा है। लाइक स्कोप हैज़ लेफ्ट अनदर नोट अक्रॉस द ब्रिज अमंग द सर्कल्स ऑफ रॉक, टेक केयर। या तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा। Who is Scrope? एंड वहाँ से एक और लेना पड़ेगा स्क्रोल, स्कोप का स्क्रोल। ओह आउल, ए आउल्स। लेट मी सी लाइक किधर है वो जगह। अरे ओके ये ही है, मुझे लगता है यहीं पर ही है। ओके तो स्क्रोल यहीं पर ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पर स्टोन। रिवेलियो। वो रहा, लेट्स गो। अब उसको पकड़ने के लिए या तो मैं ये कर सकता हूँ। अरे अब आएगा, देख नहीं पा रहा। अब आना चाहिए मेरे पास वो। ओके तो मैं इसको खींच सकता हूँ अपने पास। ओके राइट, अब तो आ जाना चाहिए। कि मुझे साइड में रखना पड़ेगा। अब सही है। तो कलेक्टेड। Almost there. Head for the pumpkins just down from the stone circle. Look inside one of them. You may able to help poor broken hearts. Pumpkins? Ah, I think I know just the place. Oh, so pumpkin वाली जगह वो थी। तो उनमें से एक pumpkin में कुछ ना कुछ पड़ा है। यार शायद रात होने वाली है यहाँ पर। रात वाले वो जानवरों की आवाज़ आ रही है, किरकिर किरकिर वाली जो। उसको उड़ा दिया बेचारी बकरी को। अगर मैं बकरी के अंदर आग लगा दूँ तो क्या होगा? भगा दिया भाई बकरी वाले। कुछ है शायद। नो या वो रस्को तो तोड़ना पड़ेगा। देवी को। So the young Slytherin must be exceptional curious by now. Meet Scope at the water edge by the broken down. Down to the water's edge. इसको क्या हो This रहा है? had better not be a trick. मैं इसको भी उड़ा सकता हूँ क्या? लेकिन तुम इंटरेक्ट लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ों के साथ कर सकते हो, जैसे कि ये बकरी। अरे रे मैं बकरी को उड़ाने वाला था वापस, बट मैं नीचे गिर गया। ठीक है जगह। मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था और ये चाहिए मेरे को सही। तो यहाँ तक नहीं ला सकते क्या? तो स्क्रोप यहाँ पर मिलने वाला है। Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Of course, what can I do for you? I'd rather not risk trouble with Black. Happy to spend 30 if it benefits. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him.
Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. I will go. How did you know about the book I found? Yeah. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me about the ring. मुझे सबसे पहले जानना है इसके कान को क्या हुआ है. मेरे हिसाब से like ब्लैक ने काट दिया है. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Okay. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages and the ring. Oh no. तो मुझे लगता है लाइक तुम जोन सा भी हाउस यूज़ करते हो ना उसके हिसाब से गेम की स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज होती है और मेनली अरे ओके ब्रो मुझे इसको सीधा ही खाना पड़ेगा. देवी को एंशिएंट मैजिक या मैं चाह तो नहीं रहा था लाइक इसको सीधा मार दूँ बट इसने कुछ तो लाइक रास्ता नहीं छोड़ा. कलेक्शन अपडेट भाई मैंने उसकी जीप ले ली ना. ओ नो इसके ऊपर तो ये ले भाई ब्रो कितने सारे हैं ये इतने सारों से तो मारूंगा. मे भी ये आग से ज़्यादा वो करते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. या सो मेरे को उसको डॉच ही करना पड़ेगा. ब्रो बहुत सारे हैं यार. ओके तो मैं भी शायद इनको पकड़ सकता हूँ जैसे ये क्यू वाला आता है ना. नाइस. और शायद मैं लेग्स को उड़ा दूँ. यार उसको कुछ नहीं हो रहा है. नहीं नहीं उनको कुछ हो ही नहीं रहा है. मेरी हेल्थ कहाँ पर है. ओके या उनको कुछ नहीं हो रहा. उनको मारने का कोई और तरीका होगा शायद. कोई और सा मैजिक होगा मेरे पास मोस्ट वेल. इससे कुछ नहीं हो रहा ठीक है. और मे बी लाइक सेकंड वाले से भी कुछ हो नहीं रहा है. क्या एक्ने से कुछ भी नहीं होगा यार. मैं उसे खींच ही नहीं पाऊँगा. खींच के करूँगा क्या. एंड इसके बाद इंसेंट्री देखता है. इंसेंट्री से हो रहा है शायद बट ओ नो. एक और हीलिंग या इसको तो ख़त्म कर देता है इजी. तो एंशिएंट मैजिक से एकदम चले जाते हैं बट क्या हुआ इनको. मे बी अगर मैं लाइक लूमस यूज़ करूँ तो क्या होगा. अच्छा उससे कुछ नहीं होने वाला है इनको. या एक तो ख़त्म हो गया. इज डेड. ये गया अब.
बस वो ब्लॉक ही था वैसे। ओए ओए ओए, मैं कुछ और यूज़ करने की देख रहा हूँ कि लाइक कुछ और ट्राई करूँ उसको, बट मुझे लगता नहीं है बस और कुछ और है इसको। ओह, तो हम लोग लाइक इनसे ऐसे भी जा सकते थे यार, छुप छुप के। देखो तो नहीं अब तो छुपने का कोई फ़ायदा नहीं, उसे पता ही है हमें। उफ, ये भाई बहुत ज़्यादा देर से मरे हैं, बहुत देर से मरे, बहुत ज़्यादा हेल्थ है इनकी। ओके, मुझे लगता है कि उनको लूमस की ज़रूरत है। अरे यार, ये मरा नहीं था। बाय बाय जीजीज ब्रो। तो मुझे लगता है मैं अभी लूमस की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, तो मैंने हटा दिया। एंड इसके साथ साथ, अरे यार तेज क्यों नहीं दौड़ पा रहा हूँ मैं। अगर मैं पानी में करूँ तो नहीं, पानी में गायब नहीं हो सकते। तो Squid. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. ओ ये स्क्विड टोस्ट खाता है। What? अरे मैंने वापस यूज़ कर दिया यार ये। अरे ये भी तो गिरने थे। और मैं कैबेज के बारे में तो भूल ही गया था। तो देखो Lumos. Lumos. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame